phone line with us. So the debate over Tiranga still continues. Now the BJP is saying that the Congress government had installed portraits of Nehru, Indira Gandhi and Rajiv Gandhi in which the tricolour was touching their legs. So, fresh attack coming in from the BJP. Is it a question to me? Yes, Mr. Manjinder. Sorry. देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी की मैं अभी ट्वीट देख रहा था. आज तिरंगे की जब बात हो रही है तो राहुल गांधी को प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज दे आर सो फ्रस्ट्रेटेड. उनको लगता है कि देशभक्ति की बात शुरू करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को देशभक्ति के साथ जोड़ रही है. और ये एक पार्टी थी जो अपनी पार्टी फैमिली लेगेसी के साथ जोड़ती थी, जो कहती थी नेहरू की लेगेसी के साथ जुड़ो, इंदिरा की लेगेसी के साथ जुड़ो. उनको पता था हमारी राज सत्ता तभी कायम रह सकती है अगर हम देश के साथ नहीं अपने परिवार के साथ जोड़ेंगे लोगों को. और वो उनको प्रॉब्लम सताती है, दिन रात सताती है. आप देखिए, कल तिरंगा मार्च निकली, उसमें उनके एमपी गए नहीं. क्यों नहीं गए? अगर आप देशप्रस्त हैं, अगर आप तिरंगे का इतना सम्मान करते हैं तो हम सारी बातें आपकी मानने को तैयार हैं. लेकिन जब तिरंगे का सम्मान करने का वक्त आता है तो आप पीछे हट जाते हैं. आप ऐसी पार्टियों के साथ अलायंस रखते हैं जो अपना तिरंगा घर पे लगाने को इनकार कर रहे हैं. आपका टोटल जितना भी अगर आप देखेंगे कांग्रेस का और खास तौर पर गांधी परिवार का जो भी देश के प्रति समर्पण रहा वो अपने परिवार के लिए रहा है. उन्होंने कभी देश के प्रति समर्पित नहीं हुए. मुझे लगता है कि आज देश के लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं. यही कारण है कि इतने फ्रस्ट्रेटेड है. अच्छी बात होती, वो भी कहते तिरंगा है, लगना चाहिए, सब घर में जाना चाहिए. सिरसा साहब, आप ये जो सवाल उठा रहे हैं, हम सीधा कांग्रेस के नेता उदित राज जी भी हमारे साथ ब्रॉडकास्ट पे जुड़ रहे हैं. सिरसा साहब बने रहिए हमारे साथ. उदित राज जी, बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि तिरंगा फहराने में आपत्ति क्या है? ये नफरत हमेशा करते रहे हैं, आज भी नफरत कर रहे हैं. मोहन भागवत जी अपनी डीपी पर क्या लगाएंगे, वेणुगोपाल जी अपनी डीपी पर क्या लगा रहे हैं. और 2001 में कुछ लोग राष्ट्रभक्त गए मुख्यालय पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए, उनके खिलाफ आरएसएस ने FIR दर्ज किया था. ये तो मोदी जी अपनी महत्वाकांक्षा के वजह से तिरंगा लगा रहे हैं घर घर, ताकि घर घर रोजगार देना न पड़े. उसमें आरएसएस गया है फंस. मोदी जी ने आरएसएस को फंसाया है. Okay. Mr. Manjinder, this is a charge coming in from Congress time and again. जो उदित राज जी भी कह रहे हैं कि questions being raised on RSS time and again on the 52 years that the organization refused to hoist the national flag. That's something that's coming up time and again. How do you respond to that? नहीं, देखिए, ये तो इनकी एक सोच है. एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक अपना झंडा है. उन्होंने देश का झंडा फहराने से इनकार किया. ये तो कभी आज तक नहीं किसी ने कहा. अपना झंडा वो लगाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक झंडा है, तो इसमें क्या बुरी बात है? जिस और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉलिटिकल नहीं है, जो कि वोट मांगने नहीं जाती, जो कि राज सत्ता में नहीं है, जिसका काम देश के प्रति समर्पित है, जिसका काम एजुकेशन से लेके देश के लोगों के साथ लड़ाई लड़ने, देश के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम है, वो उनका अपना एक झंडा है. वो अपने झंडे को सलाम करते हैं, अपने झंडे की पूजा भी करते हैं. और झंडा किसका है? वो भारत माता का झंडा है. तो भारत माता के झंडे को वो सम्मान देते हैं. और अगर वो आज देश के अंदर तिरंगे की बात है तो वो तिरंगे को भी साथ लगाते हैं. लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना झंडा, उससे कांग्रेस को कैसे एतराज हो सकता है? अगर कांग्रेस का एतराज होता तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक पार्टी का अपना झंडा था, उनका सपोर्ट ना करते. जम्मू कश्मीर ने अपने स्टेट के तौर पर अपना अलग झंडा रखा था. कांग्रेस को कभी एतराज नहीं हुआ, नेहरू जी को कभी एतराज नहीं हुआ, इंदिरा जी को कभी एतराज नहीं हुआ. तो जब इनको अपने सवाल खड़े होते हैं तो इनको जवाब देने के लिए दूसरों की कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, जबकि सब लोग जानते हैं कि आरएसएस का एक अपना झंडा है और वो अपना झंडा फहराते हैं. और झंडा किसका है? और सिरसा साहब, दूसरा आरोप ये लगाते रहते हैं कांग्रेस पार्टी, और राहुल गांधी का भी ट्वीट था, वो सामने आकर कह रहे हैं कि जितना खादी का उद्योग है उसको खत्म कर चुकी है बीजेपी सरकार, और सीधे तौर पे ये कहकर के फ्लैग कोड को भी चेंज कर दिया है, तो खादी उद्योग खत्म हो गया है. चाइनीज फ्लैग्स टेक ओवर कर चुके हैं मार्केट में. देखिए, वो चाइनीज फ्लैग की जो बात कर रहे हैं, मैं राहुल जी को याद करना चाहता हूँ. आपने चाइना से अपने एनजीओ के लिए फंड लिए हैं, ये आपकी सोच हो सकती है. आज जो खादी है, आप इसमें तो आंकड़े हैं सामने. आज खादी 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट पे चलने वाली ऑर्गेनाइजेशन है. कांग्रेस के 2013 में जब खादी छोड़कर गए थे, उससे अगर आप उसके टर्नओवर देखेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स द टर्नओवर ऑफ द खादी ग्रामोद्योग. दूसरी बात,
ये झंडा है, तो दुनिया के अंदर देश के हर घर में झंडा लगाने की बात हो रही है, तो खादी का बीच में कहां से, किसने रोका खादी का झंडा ना बनाने से और खादी का झंडा बनाने खरीदने से? भाई आप कांग्रेस को लगता है तो कांग्रेस एक ऑपोजिशन की पार्टी है, वो सारे झंडे खादी के खरीदे, किसने मना किया उनको? क्या मना किया मोदी जी ने कि राहुल जी आप खादी का झंडा मत खरीदिएगा, आप अपने माता जी को कहिएगा घर पे खादी का झंडा मत लगाएं, ऐसा कहा है किसी ने? तो कांग्रेस तो मेजर ऑपोजिशन पार्टी है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं उन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, झंडा लगाने में हिचकिचाहट है, उसके लिए तकलीफ हो रही है। गांधी परिवार, राहुल गांधी परिवार का, नेहरू परिवार का झंडे के साथ नाम नहीं जुड़ रहा, दिक्कत इस बात की, और इस बात की दिक्कत उन्होंने कल दिखाई है जब उन्होंने एक मॉब फोटो करके जवाहरलाल नेहरू की झंडे को, तिरंगे को कलर झंडा करके, जो कि तब की ब्लैक एंड व्हाइट की फोटो थी, उन्होंने डालकर अपने अंदर, जो उनके अंदर अभी तक कॉम्प्लेक्स था कि हमारा नाम नहीं कहीं आ रहा, उन्होंने कल दर्शाया है। Okay, so the war of words is continuing. Mr. Manjinder Singh Sirsa as well as Udit Raj, thank you for joining us. The war of words continue, and of course there are several programs that have been organized by the government. Yesterday it was the bike rally, the opposition leaders did not participate, and now the debate over the Tiranga still continuing. Samya, now over the course of the next few days, several programs have been planned. Also Har Ghar Tiranga is another campaign that has been planned, but clearly this battle between the BJP and the opposition over it will continue. Well, absolutely. From the looks of it, the manner in which the opposition parties, especially the Congress, are trying to place itself, where they are claiming that Azadi Ka Amrit Mahotsav is supposed to be an event that should not be politicized. It is in honoring the 75 years of freedom and should be done in the spirit of patriotism and nationalism. Right. So we are looking at the Tiranga war that seems to be exploding. The charge and the counter charges that continues to be leveled from the BJP back to the Congress, from the Congress back to the BJP. Now this is coming at a time when Rakesh Sinha, who's put up a tweet saying that when the portraits that have been put up in Parliament, you can actually see the Tiranga that is touching the legs of the leaders. Now, is this the kind of respect that needs to be accorded to the national flag? Those questions that are being raised now by the BJP. On the other side, Rahul Gandhi, who was in the state of Karnataka, he took a fresh dig at the Har Ghar Tiranga campaign because he's been posting pictures, Samya. He had visited the Khadi village industries in Karnataka and has been now leveling the allegations of how the industry, once that was flourishing, has now gone into a way which the BJP wants to plan when it comes to the anti-national organization, because they have been now pointing it out to the RSS. Of not hoisting the Tiranga for the last 52 years. Mr. Atul Anjan is with us on the phone line. Sir, good morning to you. This is back and forth that is happening over Har Ghar Tiranga, the campaign that is being run by the government, sir. The opposition not participating in those events. I think Prime Minister, first of all, and the RSS and BJP should speak to the nation and apologize that in our country, after independence, for 52 years, they could not recognize, they failed to recognize the Tiranga as our national flag. And RSS and BJP and Jansangh offices, Tricolour was not unplugged. Why it was so? First, they must apologize. And now they have become the carrier of all national ethos, which has nothing to do. Why, first of all, they should tell why they didn't recognize Tricolour. And now, Prime Minister everywhere, yes, we have a proud for Tricolour. With this flag, our martyrs have laid down life. We fought the national freedom movement. RSS and Janata and their leaders, including Shyama Prasad Mukherjee and Golwalkar, they were not the part of the freedom movement. They conspired when Bhagat Singh was hanged. Okay, so this is a debate that has gone on for long, but now as we are celebrating the Azadi Ka Amrit Mahotsav, won't you say that in the spirit of unity to celebrate it, the opposition should also be a part of the celebration, because the BJP has clarified that it's not a BJP event, it's an event where the entire country should participate. No, it is not a BJP event, it is a national event, I agree. But with observing and making this event, what they did in past
they have to recognize it and apologize before the nation. And that will be in good sense. If they are really respecting the tricolour, they must apologize before the nation. And RSS leader Mohan Bhagwat and Prime Minister Narendra Modi and all BJP leaders must apologize for that. All right, Mr. Atul Chand, thank you very much, sir, for your point of view. So we are looking at the counter allegations that are being leveled also from the opposition, saying, we just heard it from the left, saying that the BJP and the RSS must apologize to the nation. Samia, if you're listening to all of that, that is coming across as a never ending now, because the BJP is now alleging in a way that the portraits that have been put up in the parliament, the Tiranga, that national flag, actually touches the legs of those top leaders from the Congress. Well, as far as the opposition parties and the government are concerned, they have locked horns into this entire controversy that is arising out of nothing at all. Azadi Ka Amrit Mahotsav, as the Prime Minister has maintained, is an event where all political parties together must come forward to hoist the national flag in the national spirit of patriotism. But the Congress party and the opposition have been raising the issue of the RSS headquarters not hoisting the national flag for 52 years. And how has that allowed the conscience of the BJP leaders to go ahead and, align them with the RSS leadership for that matter? While the government of the day maintains that the Congress party is indulging in needless politicking where it's not required, the RSS for that matter reminds the Congress party that they are the ones who are responsible for